हमारा सुप्रीम हमारा सुप्रीम Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. From Supreme Education, this is your teacher for class 4. Students, this lecture is about our English grammar workbook. Our topics for today are comprehension paragraph and punctuation. Now we will move to our first topic, that is comprehension paragraph. Students, to solve a comprehension paragraph, we must read the paragraph very carefully so that we find out the answers given at the end of the paragraph. Our paragraph is: Muhammad Ali Jinnah is famous as Quaid-e-Azam. He is called the father of the nation. He was born in Karachi on December 25, 1876. He received his early education from Karachi. After matriculation, he went to England for higher studies. He qualified from Lincoln's Inn as a brilliant barrister. On his return to India, he joined the Indian National Congress. He was a great supporter of Hindu-Muslim unity, but narrow-minded Hindu leaders disappointed him. So he decided to join Muslim League. After joining Muslim League, he worked hard for a separate homeland for the Muslims. Now, students, we will move to our question answers. Our question is, who is famous as Quaid-e-Azam? Answer is, Muhammad Ali Jinnah is famous as Quaid-e-Azam, as it is given in the paragraph. Students, one question I have done for you. Now we will discuss the other questions and you have to write them by yourself. Question number 2 is, when and where Quaid-e-Azam was born? The answer is in the paragraph. He was born in Karachi on December 25, 1876. Where did he go for higher studies? He went to England for higher studies. Did he join Indian National Congress? Yes, he joined Indian National Congress. When he started hard work for a separate homeland? After joining Muslim League, he worked hard for a separate homeland for the Muslim. So students, that was your comprehension paragraph. Write it, find your answers as I have directed you and write them in your workbook neatly. Don't forget to write your date and day. Students, we will move to our next topic, that is punctuation. Students, punctuation means to write the capital letters at the right places and to put the commas or full stop or commas correctly. अंग्रेज़ी ज़ुबान के बड़े हरूफ कैपिटल लेटर्स मंदरजा झैल मुकामात पर इस्तेमाल होते हैं. कौन कौन सी जगह पर? जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके शुरू में हम कैपिटल लेटर लिखते हैं. When we use the word Allah, all the letters that are used for Allah are written in capital. उनको हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं. और जब भी हम कोई पोइम लिखते हैं, we start every verse of the poem from the capital letters. प्रॉपर नाउन के तमाम जो हरूफ होते हैं, प्रॉपर नाउन के जितने भी वर्ड्स होते हैं, उनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है. सैक्रेड बुक्स जैसे कुरान, बाइबल, इनके नाम लिखने के लिए हम पहले कैपिटल लेटर लगाते हैं. तमाम मज़ामीन उर्दू, इंग्लिश वगैरह, इनके लिए भी हम पहला हरूफ जो है वो कैपिटल लिखते हैं. जितने भी एब्रीविएशंस हम लिखते हैं जैसे MBBS, DEO, उनको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं. और तमाम दरियाओं, पहाड़ों, माउंटेन्स, सीज़, रिवर्स के नेम्स जो हैं वो हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. तो स्टूडेंट्स, वी विल मूव टू अवर फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ यूज कैपिटल लेटर्स ओनली वेयर नेसेसरी इन द फॉलोइंग वर्ड्स और सेंटेंसेस. फर्स्ट वर्ड इज़ अली. अली का A शुड बी कैपिटल. पेंसिल, पेंसिल शुड बी रिटन एज इट इज़ पेन. Sialkot is the name of a city, so we will write the first letter capital. The Indus is the name of the river, so we will write the both words first letter capital. Our first line is Lahore is a big city. Lahore ka L will be capital. Iqbal was born at Sialkot in Pakistan. Iqbal and Sialkot, the first letters will be written, and Sialkot, the first letters will be written in capital. We visited salt mine Khevda.
Salt mine is the name of a place, Khewda is the name of a city. The first letter of the both words will be written in capital, and W will be written in the capital because it is the beginning of the sentence. He is an MA, he ka H or MA should be written in capital. I recite the Holy Quran daily. Holy Quran is a sacred book, so it will be written in capital letter. Next is मुल्तान इज़ इन पंजाब. मुल्तान पंजाब में है. मुल्तान का M और पंजाब का P शुड बी रिटन कैपिटल. उल्फत लिव्स इन लाहौर. उल्फत का U और लाहौर का L शुड बी रिटन इन कैपिटल. द बाइबल इज़ सैक्रेड बुक. द बाइबल के दोनों वर्ड्स जो हैं दे विल बी रिटन इन कैपिटल. स्टूडेंट्स, वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट topic, that is also punctuation, but in this area we will discuss the marks of punctuation. We will learn about full stop, comma, marks of interrogation. full stop जो है वो किसी भी सेंटेंस के एंड पे लगाया जाता है. एब्रीविएशंस में भी full stop इस्तेमाल किया जाता है. जब एक ही किस्म की मुख्तलिफ़ चीज़ों को या जुमले में छोटे छोटे वक्फ़े हमने ज़ाहिर करने हो तो उसमें हम वक्फ़ा यानी कॉमा इस्तेमाल करते हैं. और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, जिसको क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, हर सवालिया जुमले के आखिर में इन एवरी क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ एवरी क्वेश्चन वी पुट इंटेरोगेटिव मार्क. सो वी विल गो टू अवर एक्सरसाइज. Punctuate the following sentences. Here is your book, father. Here is a starting word H capital. और हम इस पे फादर से बात कर रहे हैं तो हम बुक के बाद कॉमा लगाएंगे और फादर के बाद फुल स्टॉप. डू यू लिव इन लाहौर? ये एक क्वेश्चन है. फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल D एंड एट द एंड वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क. लाहौर का L B कैपिटल होगा. वेयर डू यू लिव? इट्स आल्सो ए क्वेश्चन. First letter W will be capital and at the end we will put a question mark. He is an LLB. He का first letter capital होगा और LLB is the abbreviation. So it will also be in capital. At the end of the sentence there will be a full stop. Have you finished your work? Another question. Have का H capital और at the end of the sentence there will be a question mark. When will you go to Faisalabad? That is a question. When का W capital और Faisalabad is the name of a city, capital, and at the end of the sentence there will be a question mark. Karachi is the biggest city in Pakistan. Karachi का K और Pakistan का P capital होगा. At the end full stop. The Quran is a sacred book. The Quran capital, and at the end there will be a full stop. His father has died. H of the first letter his first word his का first letter H will be capital and at the end will be a full stop. When is Bano going to school? That is a question. When का W और Bano is the name of a person, so it will also be in capital. At the end we will put a question mark. Next is, are you sick today? Students, this is also a question. R का A कैपिटल होगा और एट द एंड क्वेश्चन मार्क. यस दे आर गुड प्लेयर्स. यस और नो के बाद हम हमेशा कॉमा लगाते हैं. सो वी विल राइट द वाई ऑफ यस कैपिटल एंड आफ्टर यस वी विल पुट अ फुल कॉमा एंड एट द एंड वी विल पुट अ फुल स्टॉप. विल यू प्लीज कम टू मी? क्वेश्चन. W कैपिटल होगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क. I bought a book, a pen, a pencil and an ink pot. इसमें बहुत सारी एक जैसी चीज़ों के नाम हैं. सो हम इनको अलग अलग करने के लिए इसमें कॉमा लगाएंगे. सबसे पहले I कैपिटल होगा, A पेन के बाद कॉमा, A पेंसिल के बाद कॉमा एंड एन इंक पोट और एट द एंड a full stop. Zahida's father is an SDO. Zahida is the name of a person. Zahida का Z will be capital. SDO is the abbreviation. It will be written in the capital and at the end there will be a full stop. So students, that was our lecture for today. Write it down, note it down on your workbook.
neatly and in cursive line. Students, stay home, stay safe. Allah Hafiz.